Welcome to a new chapter called Metals and Nonmetals. This chapter is a part of chemistry. And in chemistry, the most important things is reactions and formulas. So be prepared to by heart few of the things from this chapter. I am making a list of things which you should remember by heart from this chapter. The first is names and symbols. Whose names and whose symbols? The names of the elements and symbols of the elements, which I'll send you a list. तुमको पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 30 एलिमेंट्स बाय हार्ट करना है, नाम और सिंबल. सेकेंड थिंग, फॉर्मूलाज एंड नेम्स. थर्ड थिंग, metals and non-metals. And fourth, bases and acids. I'll give you a quick example of what I mean by names and symbols of elements. Calcium, name, symbol Ca. Sodium is the name, symbol Na. Carbon is the name, symbol C. I'll send you a list from which you have to by heart it. कल क्विज होगी, क्विज में ये पूछा जाएगा. देन फॉर्मूलाज एंड नेम्स. किसका फॉर्मूला? वाटर का फॉर्मूला H2O. मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड formula MgO. So likewise, names of chemicals and formula of chemicals. Sodium hydroxide, NaOH. N capital, A small, O and H capital. Metals and non-metals का लिस्ट. तो मेटल्स में आएगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक. जितने भी मेटल्स हैं, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, प्लैटिनम Pt, मर्क्यूरी Hg, हर एक का नाम और सिंबल. एंड नॉन मेटल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाम और सिंबल दोनों. एंड लास्ट इज एसिड्स एंड बेसिस के नाम और फॉर्मूला. एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3. तो ये सारे एसिड्स के फॉर्मूलाज हैं उसके नाम के साथ. एंड बेसिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, potassium hydroxide, calcium hydroxide, etc. So I'll give you a list. You have to write that 3 times and by heart it for tomorrow's test. बिना सिंबल के केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं. So मैंने एडवांस में तुमको होमवर्क दे दिया है. I'll send you a PDF from which you have to copy it 3 times and by heart it. Starting the chapter from understanding the appearance of few things. Iron, लोखंड, is shiny or dull? Shiny. Coal, dull. Sulfur, dull. Aluminium, shiny. Aluminium foil आती है सिल्वर कलर की. Copper, shiny. Is it hard or not hard? आयरन इज हार्ड, कोल नॉट हार्ड, हाथ से टूट जाता है कोल. सल्फर नॉट हार्ड, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर हार्ड. फ्रॉम दिस वी कम टू अ कंक्लूजन अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स, non-metals.
मेटल्स में आएगा आयन फ्रॉम दिस लिस्ट, एल्यूमिनियम एंड कॉपर. आयन का सिंबल Fe है. सो आयन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स आर कोल जिसका फॉर्मूला है कार्बन का, सल्फर जिसका फॉर्मूला है S. So what is the conclusion from this table? We can conclude that all metals are shiny and all metals are hard, and all non-metals are dull and all non-metals are not hard. So remember this properties. Property मतलब quality या characteristics. जैसे sugar cane is long, pulses are high in protein, so this is called quality characteristics. Water is always liquid, ice is always solid. So this physical property you have to remember. Metals are shiny and hard, non-metals are dull and not hard. That's called physical properties. Physical property of metal, non-metal पहला टॉपिक है जिसमें हमने हार्ड, नॉट हार्ड, शाइनी, नॉट शाइनी देखा. अब हम देखेंगे मेलिएबल. मेलिएबल का डेफिनेशन याद रखना. इट इज एन एबिलिटी ऑफ मेटल्स, सिर्फ मेटल्स होते हैं मेलिएबल, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी मेड इनटू थिन शीट्स. कोई भी मेटल का पतला शीट बना सकते हैं, जैसे सैंडविच रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल, या मिठाई के ऊपर गोल्ड एंड सिल्वर फॉइल लगाते हैं. So foil is a thin sheet of metal which is possible. छापरू shade होता है, that's a thin sheet of metal. Which metal? Iron. So iron, copper, zinc, aluminium, gold, silver, all metals can be made into thin sheets, and that property is called malleable or malleability. Malleability में क्या होता है? When you take an iron piece और उसको हथौड़ा मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, will it break? Will it break? No. Iron nail टूटता नहीं है, but it will become flat because it can be converted to a thin sheet. Coal, it will break and it will not become flat. Aluminium will become flat aluminium foil, but it will never break. And pencil lead cannot be flattened. Pencil की अणी हो एना पर हथौड़ो मार दो भुक्को થઈ જાય. It breaks, does not flatten. Again, what do we conclude from this table? We conclude that metals which are iron, Fe, aluminium, Al, can become flat when you hammer it, and that's called malleable. But non-metals, जिसके दो एग्जाम्पल है, कोल मतलब कार्बन, पेंसिल लेड इज ऑल्सो कार्बन, and that carbon does not become flat, it just breaks when you hammer it. Therefore they are called non-malleable. That's the property which you have to by heart. Metals are malleable and non-metals are non-malleable. Good conductor of heat. Good conductor of heat मतलब heat can pass through that particular thing. Metals are good conductors of heat because they allow the heat to pass through them. છાપરા ઉપર એક તરફ તડકો પડતો હોય તો બીજી તરફ જ્યાં તડકો નથી એ પણ ગરમ થઈ જાય. अगर तुम एक मेटल की पेन लेके कैंडल फ्लेम में रख दो तो यहां से गर्मी तुम्हारे हाथ तक पहुंच जाएगी. टेक अ स्पून एंड पुट इट इन बॉइलिंग वाटर. आफ्टर 2 minutes अंदर तो गर्म है बट ऊपर भी गर्म हो जाएगा. दैट्स कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट. आयरन रॉड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Sulfur is a bad conductor of heat. Coal is a bad conductor of heat, and copper is a good conductor of heat. Why? Because good conductors are metals, जैसे copper and iron.
बैड कंडक्टर्स आर नॉन मेटल्स जैसे सल्फर एंड कोल. Good conductor of electricity, same property. Metals are good conductors of electricity. So iron is a good conductor, electricity can pass. तुमको शॉक लग सकता है. Sulfur is a non-metal, therefore bad conductor. Coal is a non-metal, bad conductor. Copper is a metal, good conductor. That's how you decide. और एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट है जिसे तुम चेक कर सकते हो वेदर दैट मटेरियल इज गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. करना क्या है, यू हैव टू टेक अ बल्ब एंड अटैच द बल्ब विथ 2 वायर्स, 1 2. एक तरफ बैटरी लगा दो और बैटरी के दूसरी तरफ से एक और वायर. एंड नाउ whatever you want to test should be kept between the 2 ends of this wire, here and here. When you keep an iron nail, the bulb glows. That means iron is allowing electricity to pass in this circuit. इसको बोलते हैं सर्किट. और सर्किट में करंट पास हो रहा है और बल्ब चालू हो गया, मतलब नेल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट इसकी जगह पे कोल ले लो, कोलसो, द बल्ब विल नॉट ग्लो, therefore current is not passing and coal is a bad conductor of electricity. That's called an electric tester. तो 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, how to make an electric tester. To make an electric tester you need a battery, you need a bulb and you need wire. It's very easy to make at home also. अगर तुम्हारे पास ये सब चीजें हैं तो तुम ट्राई कर सकते हो. डक्टिलिटी, एक नया वर्ड आया था मेलिएबल, और मेलिएबल से आता है मेलिएबिलिटी, अबिलिटी टू बिकम शीट्स, और ये उसका कजिन है डक्टिलिटी या डक्टाइल. Ductility means ability present only in metals जहां पे they can be created into wires. So malleability मतलब शीट बनाना, ductility मतलब वायर बनाना, और वायर हमेशा मेटल से बनता है, कॉपर, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर. कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के वायर्स नहीं होते. क्यों नहीं होते? Because they all are non-metals and non-metals are not ductile. Sonorous. Sonorous means ringing sound. जब तुम मेटल को जोर से पछाड़ते हो, ये देखो टेबल, इट्स नॉट रिंगिंग, टंग आवाज नहीं आ रहा है, बॉप बॉप आवाज आ रहा है. एंड दिस साउंड मीन्स इट इज नॉट सोनोरस. वुड नॉन मेटल है तो वो सोनोरस नहीं है. सो अबिलिटी ऑफ मेटल्स टू मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन यू हिट देम, इट्स कॉल्ड सोनोरस. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, most of the metals are sonorous, but non-metals are not sonorous. Therefore, how many properties did we see? We started from shine, मतलब lustrous. Metals are lustrous, non-metals are not lustrous. Then we did hardness. Metals are hard, non-metals are soft. Then we did malleable, मतलब flat sheets. So metals are malleable, non-metals are non-malleable. Then we did heat. Metals are good conductor of heat. हाँ, malleable में flat sheet और दूसरा होता है bricks जो नॉन मेटल है.
Heat, good conductor, bad conductor. Electricity, good conductor, bad conductor. Ductility, मतलब वायर बनाने की कैपेसिटी. Metals are ductile, non-metals are non-ductile. And last is sonorous, मतलब ringing sound आता है कि नहीं. So this list you have to remember, it's a 2-mark question. List down the physical properties of metal and list down the physical properties of non-metals. Metals are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, good conductor of heat and electricity. पूरा लिस्ट आ गया. और एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है नॉन मेटल्स में, जो तुम खुद लिख सकते हो. बट साहिबान, कदरदान, मेहरबान, ध्यान से देखो. क्या देखो कि ये बॉक्स में एक्सेप्शंस लिखे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्शंस मतलब जो रूटीन नहीं है. रूटीन में ऑल मेटल्स आर good conductors and ringing sound and hard, but sodium and potassium, symbol Na and K, they are not hard. Exception number 1, they are soft. सब मेटल सॉलिड होता है, but mercury is a liquid metal. Therefore, remember these exceptions very carefully. इन मेटल्स, नॉन मेटल में कोई एक्सेप्शन नहीं है. सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज. इफ यू आस्क मी, दिस इज वेयर द चैप्टर बिकम्स टफ. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर. इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान देना. जाओ जाके मुंह धो के आओ, पानी पी के आओ, करो और नींद उड़ाओ, बिकॉज दिस इज वेरी टफ एंड इंपॉर्टेंट. You must have all heard the terms metals and non-metals. Can you look around and see if they exist in your surroundings? What is your table made up of? Aluminium or wood? What about the phone or the laptop you're viewing this video on? Is it made up of metals and non-metals? As a matter of fact, it is. Almost everything around will be made up of either a metal or a non-metal. But how do you differentiate between the two? Is it as easy as the difference between the two colors, black and white? Well, for that, let us look at the physical properties of each category in detail. Let us take, for example, the ornaments. Any of the ornaments will do. What do you have to say about them? You will observe that most of them are made up of gold or silver. Let us look at them closely. Do they have a shining surface? Or even the aluminium utensil in the kitchen? Does it shine? Of course, both gold and aluminium have a certain shine. Do you know what this shine is called? Well, it is called luster, and as both gold and aluminium are metals, this is known as metallic luster. Now we know that metals have a metallic luster. Now if the utensil drops on the floor, does it break into parts? No, right? That is because metals are generally hard in nature. However, this hardness varies from metal to metal. A very thin plate of gold, for example, can be easily broken with a little pressure. Plate? Did I say plate of gold? How do you think huge aluminium sheets are made? Or sheets of copper or zinc? If I take a hammer and beat them, will they break or will they turn into sheets? It is the amazing property of metals to be beaten into sheets. And we call this property of metals as malleability of metals. Most metals can be beaten into thin sheets. Do you know another important property of metals? Have you ever seen copper wires or thin gold wires used to make jewelry? Metals, by nature, can also be drawn into wires. Do you have any clue as to what this property is called?
It's called ductility of metals. The ability of metals to be drawn into wires is called ductility. There is an amazing fact I want you to know. A single gram of gold can be drawn into a 2-kilometer long wire. Isn't that amazing? Like luster, malleability, ductility, and that they are hard. These were the 4 properties, right? Can you think of some more properties of metals? Metal utensils are used for cooking, aren't they? Why do you think they're used for this purpose? Which energy do we need to cook food? Heat energy. Correct. We need heat energy to cook food, and metal utensils are good conductors of heat. They help transfer heat evenly through the entire surface and provide even heating. No doubt, most metals are known to be good conductors of heat. Do you know the 2 best conductors of heat? They are silver and copper. 2 other metals like lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. Electric wires were also made up of metals, right? Why is that? It's because they are good conductors of electricity too. If we have a battery and a bulb connected in a circuit with a metal wire, you will see that the bulb will glow when the switch is closed. And because they are good conductors of electricity, they are coated with rubber-like material. This rubber-like material acts as an insulator which protects us from being electrocuted if we touch the wire by mistake. Do you know any other property of metals? What happens when we strike a metal on a hard surface? Like utensils banging against the sink. Can you hear a sound produced by metal? Yes, this is another property of metals. We can call metals as sonorous, meaning they produce sound when hit against a hard surface. No doubt, school bells, church bells, or the bells in a temple are made up of metals. If these are the characteristics of metals, what do you think will be the characteristics of non-metals? In simple words, just the opposite of metals. In a nutshell, non-metals like carbon, iodine, or sulfur do not have luster. They do not shine and are brittle in nature. What do we mean by brittle? They cannot be beaten into sheets or wires, as most of them turn into powder when hit by a hard substance. Non-metals can also be gases like oxygen, hydrogen, or solids like carbon, sulfur, etc. Do you know of any non-metal in the liquid state? Bromine is the only non-metal which is in the liquid state. Non-metals do not conduct heat or electricity, and they do not produce that sound when hit against a hard surface. This means that they do not have the property of sonority. So isn't it easy and simple to differentiate between metals and non-metals only on the basis of their physical properties? I doubt that, but don't worry. There is another way out of this. It is to differentiate the 2 based on their chemical properties. How is that done? For that, you will have to watch our next lesson. Chemical properties means how a particular metal or non-metal react. Reaction. हैरी पॉटर अगर मूवी देखा है तो उसमें एक एपिसोड में ऐसा था वेयर द चिल्ड्रन हैव टू फेस देयर फियर, और डब्बे में से उनका सबसे वर्स्ट फियर निकलता है बाहर और उसको फेस करना है. एंड टीचर वॉज ऑब्जर्विंग हाउ डज द स्टूडेंट्स रिएक्ट. आर दे कॉन्फिडेंट, आर दे अफ्रेड, आर दे टेरिफाइड, डू दे कोलैप्स और डू दे स्टार्ट लाफिंग. रिएक्शन. How do you react or how does metals and non-metals react? But reaction देखने के लिए कुछ तो करना पड़ता है. तो सामने वाले का रिएक्शन होगा ना. तुम कुछ करोगे ही नहीं तो रिएक्शन कहां से पता चलेगा? तो हम क्या करने वाले हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम 5 चीजों के साथ चेक करेंगे. ऑक्सीजन के साथ कैसा बिहेव करता है, वाटर के साथ कैसे बिहेव करता है, एसिड के साथ कैसे बिहेव करता है, बेस के साथ कैसे बिहेव करता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे. So 5 things, and these blue fonts are from your textbook. So literally the textbook has exact same 5
topics: reaction with oxygen, water, acid, base, and displacement reaction. Let's see them one by one, but remember this is the most important and difficult topic of the chapter. लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है without fail. First we will see how do metals and non-metals react with oxygen. मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे. केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. फर्स्ट is general observation. Generally metals are solid. Generally metals are good conductor of heat electricity. Generally metals are hard. Generally metals are malleable and ductile. Generally metals react with oxygen to form metal oxide. याद रखना, ये जनरल रिएक्शन बोलते हैं इसको. जनरली ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड जनरली ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक. एसिड और बेस दो तरह के चीज़ें होती है. एसिडिक चीज़ खट्टी होती है, नींबू, और बेसिक चीज़ खट्टी नहीं होती, कड़वी होती है, जैसे वॉशिंग पाउडर. वॉशिंग पाउडर, हार्पिक, सोप, हैंड सैनिटाइजर वगैरह सब बेसिक. एंड लेमन, इमली, टमाटर, कच्चा आम, एसिड, टॉयलेट क्लीनर, ये सब एसिड्स होते, खट्टे होते. सो एसिड्स एंड बेसिस आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इन केमिस्ट्री. मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक. एसिड और बेस चेक कैसे करते हैं? लिटमस टेस्ट करके. What is litmus test? गूगल करके एक फोटो देखो तो समझ में आ जाएगा. एक फोटो है ये. मार्केट में लिटमस पेपर मिलता है. लिटमस पेपर इतना सा स्ट्रिप्स होता है, उंगली जितना छोटा स्ट्रिप होता है. एंड दिस लिटमस पेपर इज द फास्टेस्ट थिंग टू चेक कि चीज़ एसिड है, बेस है या न्यूट्रल. वाटर इज न्यूट्रल, ना वो खट्टा है, ना कड़वा है, ना एसिड है, ना बेस है. तो एसिड, बेस एंड न्यूट्रल चेक करने के लिए क्या करने का? यू हैव टू डिप बोथ. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर्स. एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लू. एंड ब्लू और रेड दोनों को डिप करो बेस में, तो व्हाट विल हैपन इज रेड बिकम्स ब्लू एंड ब्लू रिमेन्स ब्लू. मतलब एंड रिजल्ट इज ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू बेस. दैट्स व्हाट यू हैव टू बाय हार्ट. फिर दोनों लिटमस पेपर को एसिड में डिप करो तो यू विल फाइंड रेड रिमेन्स रेड बट ब्लू बिकम्स रेड. रेड रेड एसिड. एंड थर्ड ऑप्शन, दोनों लिटमस पेपर को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिप करो तो रेड रिमेन्स रेड, ब्लू रिमेन्स ब्लू. देर इज नो चेंज. एंड व्हेन देर इज नो चेंज इन लिटमस पेपर इट इज कॉल्ड न्यूट्रल. दैट्स कॉल्ड लिटमस टेस्ट थ्रू लिटमस पेपर, अवेलेबल इन मार्केट. समान कॉम्प्लेक्स हमारे क्लासेस के सामने एक मॉल है, वहाँ पे ABC सर्जिकल करके छोटी सी दुकान है, उसमें लिटमस पेपर मिलता है. तो तुम ट्राई कर सकते हो घर पे जाके, टेस्टिंग डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू. क्यों लिटमस डिस्कस किया? बिकॉज उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी. कमिंग बैक टू केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज मेटल ऑक्साइड. और मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, वो चेक करने के लिए लिटमस टेस्ट करेंगे. कौन सा मेटल? अब एग्जाम्पल्स की बारी आती है. सारे एग्जाम्पल्स बाय हार्ट होने चाहिए. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ आयन. व्हेन आयन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, रेडिश कलर्ड रस्ट इज प्रोड्यूस्ड. ये देखो, आयन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन,
રસ્ટ મતલબ આયન ઓક્સાઇડ. કાટ લાગી જાય લોખંડ, એ કાટ લાગવું એટલે ઓક્સિડેશન રિએક્શન, એટલે રિએક્શન વિથ ઓક્સિજન. અને એ બ્રાઉન બ્રાउन पाउडर इज कॉल्ड आयन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3. So iron reacts with oxygen to form Fe2O3. This reaction has to be by heart. एक भी अल्फाबेट या नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए. इफ इट्स कैपिटल इट हैज टू बी कैपिटल, इफ इट इज स्मॉल इट हैज टू बी स्मॉल. नंबर ऊपर है या नीचे है, छोटा है या बड़ा, सब कुछ बाय हार्ट करना है. आयन प्लस ऑक्सीजन इज आयन ऑक्साइड एंड दिस इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑफ विच मेटल? आयन मेटल. कैसे टेस्ट करेंगे कि ये ऑक्साइड बेसिक है? तो वो टेस्ट करने के लिए टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी है विच इज वेरी सिंपल. गो टू अ जंकयार्ड एंड कलेक्ट सम रस्ट. कोई पण जूनी पुरानी तूटली फूटली मेટલની વસ્તુ હોય, લોખંડની, તે કાટ લાગેલી હોય, એને ઘસી ઘસીને એનો પાવડર કાઢો. दैट पाउडर इज कॉल्ड रस्ट. और वो रस्ट को पानी में मिला दो तो वो लिक्विड ही बन जाएगा. और वो लिक्विड को प्लेट में निकाल के टेस्ट करो. यू सी रेड हैज बिकम ब्लू. And red litmus paper, when it becomes blue, what did we learn? That it is a base. Blue. Red to blue matlab base. Second reaction is copper. अब कॉपर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मॉइस्ट एयर इज प्रेजेंट, हवा एंड मॉइस्चर, तो हवा में से मॉइस्चर का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज हेल्प करते हैं रिएक्शन करने को. सो सम रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विदाउट हेल्प. फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुमको डराना है. इट इज नॉट पॉसिबल इफ यू आर डेफ एंड ब्लाइंड. तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, मैं कैसे डराऊं तुमको? हाँ करूंगा तो तुम देख नहीं सकते, हाँ चिल्लाऊंगा तो तुम सुन नहीं सकते. Therefore, we need eyes and ears to gather information and react. वैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ तब रिएक्ट करता है जब मॉइस्ट एयर साथ में हो. और रिएक्ट करने के बाद बनता क्या है? बनता है CuOH2 and CuCO3. So this reaction has to be by heart with names. By heart with names मतलब Cu का नाम कॉपर, मॉइस्ट एयर, O2 का नाम ऑक्सीजन, CuOH ट्वाइस का नाम कॉपर हाइड्रोक्साइड. Chemistry is all about remembering these names. And CuCO3 मतलब कॉपर कार्बोनेट. So copper reacts with oxygen in presence of moist air to give copper hydroxide plus copper carbonate को by heart करो. This is chemical property of reaction with oxygen. What is the color of this copper hydroxide copper carbonate? ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए कलर याद रखना, ये रहा. कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स रस्ट विच इज ग्रीनिश एंड रस्ट ऑफ आयन इज रेडिश. एंड लास्ट मेटल प्लस ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट्स कॉल्ड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. नॉन मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. केमिकल नंबर प्रॉपर्टी नंबर 1 वाज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. मेटल हमने देखा. नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? जनरल रिएक्शन याद रखो. जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड. पीछे था मेटल ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड. मेटल था बेसिक, ये है एसिडिक.
लिटमस से टेस्ट किया था, हम इसको भी टेस्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, थैंक गॉड देर इज ओनली वन एग्जाम्पल, सल्फर reacts with oxygen to form sulfur dioxide gas. और ये सल्फर डाइऑक्साइड मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में मिक्स करो तो बनेगा सल्फरस एसिड. और सल्फरस एसिड पक्का एसिड है कि नहीं, कैसे टेस्ट करने का, ये एक्सपेरिमेंट से. और क्या है ये एक्सपेरिमेंट वो हम लाइव देखेंगे, बट पहले मेरे से समझ लो. एक जार में एक लंबी स्पून के अंदर सल्फर लो, जार तो अलग है सॉरी, एक लंबी स्पून में सल्फर लो और सल्फर को कैंडल के ऊपर गर्म करो, वो जलने लगेगा. और जलते हुए सल्फर को जार में डिप कर दो और ऊपर से बंद कर दो. डिप क्या किया है, सल्फर जो जल रहा है, और जलता हुआ सल्फर क्या क्रिएट करता है, SO2 गैस. नाउ वी हैव टू टेस्ट कि एसिड है कि बेस. तो टेस्ट करने के लिए जिस जार में SO2 है उसमें पहले से या बाद में थोड़ा पानी ले लो. सो SO2 मिक्सेस विथ वाटर एंड क्रिएट्स H2SO3. और वो H2SO3 के साथ लिटमस टेस्ट करो तो पता चलेगा दैट H2SO3 इज एसिडिक. एंड देयरफॉर यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ दोनों पिंक हो गए, मतलब रेड. रेड रिमेन्स रेड एंड ब्लू बिकम्स रेड, देयरफॉर इट इज एसिड. सो sulfur plus oxygen, sulfur dioxide gas, and sulfur dioxide gas reacts with water to form sulfurous acid. Chemical property of non-metal plus oxygen is non-metal oxide, which is acidic का पूरा कुंडली. We saw that elements cannot be clearly classified into metals and non-metals based on their physical properties. Will chemical properties help? Let's understand chemical properties of metals first. When we're looking at chemical properties of metals, there are a few things we will look at. We will see what happens when metals are burnt in air, when metals react with water, when metals react with acids, and lastly, when metals react with solutions of other metal salts. Now, in all these four categories, there's just one simple thing we will do. We will look at how reactive the metals are. If the metals react easily, may it be with oxygen or air or anything else, we say that they are more reactive. When it's more difficult for them to react, we say that they are less reactive. Let's focus on the first category. Metals burnt in air. The most important points to note here is that almost all metals react with oxygen to form metal oxides. These metal oxides that are formed are usually basic, but the metal oxides being formed in one thing, but do all metals react with oxygen at the same rate? Not really. Different metals show different levels of reactivity towards oxygen. Alkali metals such as sodium and potassium react vigorously with oxygen. In fact, they react even if they are just kept in the open, that is, at room temperature. They don't even need fire to ignite the reaction. Silver and gold do not react with oxygen at all. Yes, they don't react even at high temperatures. So we see somewhat of a pattern event amongst the metals.
Sodium and potassium are more reactive, whereas magnesium is relatively less reactive. So this is the list of what happens when you burn metals and non-metals. When metals are burnt, oxides of metals are created, and those oxides, when dissolved in water, create base. When non-metals are burnt, oxides of non-metals are created, and when the oxides of non-metals are dissolved in water, acids are formed. So this table is a big database of names, and it will be better if you know the formula of each. I'm going to just give you the summary. Metal becomes metal oxide, and metal oxide becomes a base. Metal versus base. And non-metal, when it burns, becomes non-metal oxide, which dissolves in water to become acid. Sulfur gives sulfuric acid, nitrogen gives nitric acid, carbon gives carbonic acid, etc. So remember these names and formulas, which I will give you in the PDF. Chemical property number 2, reaction with water. Metal and non-metal react with water in a different manner. Let's look at metals first. In metal, there are two families. The first family is of those metals which react vigorously. Vigorously का मतलब होता है violently. For example, sodium, potassium, lithium. These three metals react violently with water. In fact, when they are put inside water, they burst into flames. पानी में जलने लगते हैं. So read this paragraph. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water, and a lot of heat is generated. Therefore, it is very dangerous to store sodium normally. It is always stored inside kerosene. केरोसिन का एक कंटेनर होता है, उसके अंदर डिप करके रखते हैं सोडियम को, बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑल्सो एंड लिथियम ऑल्सो. And second family of metals are slow reactors like iron, copper, zinc, everybody else. So lithium, sodium, potassium छोड़ के बाकी सारे reacts with water very slowly. And what about non-metals? Non-metals do not react with water at all. उनको पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता. They don't react with water. In fact, phosphorus is stored inside water because it reacts with air. वो हवा के साथ रिएक्ट करके जलने लगता है, इसलिए उसको पानी के अंदर स्टोर करते हैं हवा से दूर रखने के लिए. So chemical property number 2 is very easy. It has no reactions. It has just information which you have to remember. Let's look at a small video how lithium, sodium and potassium burns violently in water. React with water to form metal oxides and hydrogen gas. And if the metal oxide formed is soluble in water, it will dissolve to further form metal hydroxide. So how can we judge the order of reactivity based on their reaction with water? We perform a simple task. First, we take a beaker half filled with cold water and see how the metals react with it. Some of the metals will react with cold water, but most of them won't. Out of those metals which didn't react with cold water, we try to add them to hot water and see how they react. Again, some will react with hot water and some won't. Those that don't react with hot water, we see how they react with steam. And that will kind of give us the order of reactivity. Ones which react easily with cold water are more reactive, and the ones which required steam to react are not as reactive. Metals like sodium or potassium react violently with cold water. In cases of these two metals, the reaction is so violent that the evolved hydrogen immediately catches fire. The equations look like this.
This hydrogen catches fire immediately after the reaction. That's how vigorous the reaction is. So we know that sodium and potassium are very reactive. Remember, we're still talking about reaction with cold water. How does calcium react with cold water? Well, calcium does react with cold water, but the reaction is not as violent as what we'd seen with potassium and sodium. Magnesium? Does it react with cold water? No, it doesn't. But magnesium reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. The remaining metals we see here don't react with hot or cold water. But aluminium, iron and zinc react with steam to form metal oxide and hydrogen. And the other metals like lead, copper, silver and gold don't react with water at all. This is lithium metal. It's quite difficult to cut. Then it is sodium metal, which is soft. And then there is potassium, which is again a hard metal. Lithium, sodium, potassium, all three are going to be put inside water and we are going to see their individual reactions. Lithium instantly starts to burn and it leaves a purple color. It is also releasing a gas which is hydrogen gas, H2. Similarly for sodium, and you can see here potassium also burns in a similar manner. All three are releasing gases, which is hydrogen gas, which is a highly flammable gas. What happens when you put little more amount of metal in the beaker? It will create a kind of explosion because it is highly reactive. Too much heat will create fire, flames and a blast. Property number 3 is reaction with acid. Again, you have to by heart this table, that what reacts with an acid and what does not react with an acid. A, B, C, D, E, F. There are 6 things given to us, out of which magnesium ribbons is metal, aluminium is metal, iron is metal, copper is metal, charcoal powder is non-metal, sulfur powder is non-metal. Metals react with dilute hydrochloric acid. In the first case, we are trying reaction with dilute hydrochloric acid. And in the second, we are trying reaction with sulfuric acid. And this is the line in between. Magnesium reacts with R for reaction. So magnesium reacts with hydrochloric acid. Aluminium reacts with hydrochloric acid. Iron also reacts, but copper does not react with hydrochloric acid. And this is the line of metal versus non-metal. So copper is a metal which does not react with acid. याद रखो. What happens when you warm it? ये रूम टेम्परेचर पे था, बट जब तुम मेटल को गर्म करोगे तो will the reaction increase or decrease? It will increase, but copper will still not show any reaction.
exactly same at room temperature. Magnesium will react with sulfuric acid, aluminium will react with sulfuric acid, and iron will react with sulfuric acid. But when warm, the reaction will become fast. But copper does not react with normal temperature, but sulfuric acid के साथ hot condition में it does show reaction. In short, metal can react with acid, and the second conclusion is non-metals cannot react with acid at room temperature, which is normal temperature, as well as hot temperature. It just doesn't react with acids. This is the reactions which you have to by heart, that when magnesium reacts with hydrochloric acid, what happens, what is formed. तो ये पूरा रिएक्शन बाय हार्ट करना है नाम और फॉर्मूलाज के साथ. दैट व्हेन मैग्नीशियम reacts with hydrochloric acid, magnesium chloride and hydrogen gas is formed. When aluminium reacts with hydrochloric acid, aluminium chloride and hydrogen gases are formed. When zinc reacts with hydrochloric acid, zinc chloride and hydrogen is formed. So you see a peculiar thing. Acids generally liquid होते हैं. So you take some acid and then take a piece of metal and put inside. After some time, what will you observe is gas starts to come out from this beaker. Which gas is this? It is hydrogen gas. और कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस था? You have to keep a burning matchstick near the mouth of the beaker. एक जलती हुई माचिस की तीली रखोगे तो पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस था. Because hydrogen gas burns vigorously. It catches fire. So if it catches fire, you can be sure that it is hydrogen gas. Fourth chemical property is reaction with base. But see, this was metal with acid. Non-metal with acid की reaction क्यों नहीं है? Because table ने हमको बताया that they absolutely do not react with acids. Remember that. Fourth chemical property, reaction with a base. कौन सा बेस लिया है टेक्स्ट बुक में? सोडियम हाइड्रोक्साइड. So we have to take a base. Recap. Do you remember the name of two acids which we had taken for experimenting? Hydrochloric acid and sulfuric acid. Look at the table. Hydrochloric acid HCl and sulfuric acid H2SO4. तो एसिड की प्रॉपर्टी हो गई. अब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे. और कौन सा बेस लेंगे? NaOH. So sodium hydroxide base is reacted with a metal. What do you expect? You expect some salt to be formed and hydrogen gas is released. G for gas. ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम. सो मेटल कौन सा लिया? Al. बेस कौन सा लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. बनेगा क्या? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड and hydrogen gas will be released. Sodium
The last topic is displacement reaction. Now, what is displacement reaction? It has to do with this list. ध्यान से देखो ये list. In the list of metals, there are some metals which are highly reactive, and there are some which are less reactive, and there are few which are not at all reactive. कोई रिएक्शन ही नहीं. पानी के साथ नो रिएक्शन, एसिड के साथ नो रिएक्शन, बेस के साथ नो रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ नो रिएक्शन. So who reacts fast, violently, vigorously, and who reacts cool and calm, and who does not react? तो साइंटिस्ट ने क्या किया? They carried out experiments with all the metals and recorded how they react with oxygen, water, acid, base. And on that basis, they created a list like this. और ये लिस्ट में सबसे 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 डेंजरस और हाईली रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम. उससे थोड़ा कम रिएक्टिव कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड गोल्ड. ये सब के फॉर्मूलाज और नाम आने चाहिए. तो दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. और ये रिएक्टिविटी सीरीज हमको क्या कहती है? दैट इफ अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्रेजेंट, हम दो चीज जब मिक्स करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हु विन्स? द मोर रिएक्टिव मेटल विन्स. And now I will explain you what do I mean by winning. Okay. एक बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया. सॉल्यूशन मतलब लिक्विड. So we have taken a liquid which is CuSO4. और ये कॉपर सल्फेट में हम जिंक डाल रहे हैं. Will zinc be able to snatch SO4 from copper? कॉपर के पास SO4 है, that is called sulfate. क्या सल्फेट कॉपर को छोड़ के जिंक के पास चला जाएगा? The answer is decided by the activity series, that who is strong and who is weak. ऊपर वाले strong, नीचे वाले weak. So now you see for yourself कि कंपटीशन है कॉपर और जिंक के बीच में. कॉपर का है ये रहा, जिंक ये रहा. सो जिंक इज स्ट्रॉन्गर एंड कॉपर इज वीकर. इसका मतलब ये भाई साहब सल्फेट कॉपर को छोड़ के जिंक के साथ चले जाएंगे. Therefore, the chemical reaction which is written is something like this. When blue colored copper sulfate solution के अंदर जिंक हम डालते हैं तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, बिकॉज जिंक ने सल्फेट छीन के जिंक सल्फेट बनाया जिसका कलर नहीं होता है, एंड रेड कलर का पाउडर क्रिएट होता है विच इज कॉपर, क्योंकि कॉपर हो गया है अकेला. ये सब क्यों हुआ? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. देयरफॉर जो सल्फेट आयन था दैट वाज सक्सेसफुली टेकन बाय जिंक टू बिकम जिंक सल्फेट, और जो कॉपर सल्फेट था जिसका सल्फेट छीन लिया गया है वो कॉपर अब अकेला हो गया. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है जगह बदलना. किसने जगह बदली? SO4 ने. SO4 पहले किसके साथ था? Cu. और किसके साथ चला गया? Zn. क्यों? बिकॉज जिंक इज मोर पावरफुल देन कॉपर.
displacement reaction. But it's not necessary that displacement reaction will happen every time. But first, let's see this reaction with our eyes. Hi students, in today's experiment, we will be looking at the displacement reaction of metals. The chemicals that we will need are a beaker of copper 2 sulfate solution, as well as a strip of zinc metal. What do you think will happen if we were to place this piece of zinc into the solution? Let's find out. We observe that as the reaction proceeds, the solution changes from blue to colorless. In addition, a reddish-brown solid also forms on the surface of the zinc metal. So what is the chemistry behind this? Let's take a look. This is a beaker of copper 2 sulfate solution. The solution is blue due to the presence of the copper ions. What will happen if we add a piece of zinc into the solution? Let us take a closer look at the reaction. The piece of zinc metal is made up of many zinc atoms, which are packed regularly in layers. If we take a look at the reactivity series of metals, we know that zinc is a more reactive metal than copper. Over time, as the reaction proceeds, more zinc ions go into the solution and more copper atoms are being deposited onto the surface of the metal strip. As such, we can say that the more reactive zinc metal has displaced copper, the less reactive metal from its salt solution. Now, let us check if you have fully understood the concept of the reactivity series of metals and how it directly affects the displacement reaction of metals. Over here, we have a beaker of colorless zinc sulfate solution and a strip of reddish-brown copper metal. What do you think will happen if we were to place this piece of copper into the solution? So now, as per this video, we have zinc sulfate solution. So the colorless liquid was zinc sulfate, and the question is what will happen when we add copper into it. Reaction will only happen, displacement reaction, where this sulfate is taken away by copper. सल्फेट जिंक के साथ है, वो कॉपर ले जा सकता है कि नहीं, दैट्स द मेन क्वेश्चन. Answer is hidden in this reactivity series. Copper is here, zinc is here. Zinc is more reactive, copper is less reactive. तो क्या कॉपर सल्फेट को जिंक के पास से छीन सकता है? नहीं. So answer is no reaction will happen. Let's find out. We observe that there is no reaction between copper and zinc sulfate. Why is this so? If we take a look at the reactivity series of metals, we know that copper is less reactive than zinc. Thus, both the copper atoms and zinc ions are happy to remain in their original states in this case, and no redox reaction occurs.
Let's look at one more case. Uh, say zinc sulfate and iron. What will happen if we take zinc sulfate and mix it with iron metal? Do you think reaction will happen? Iron is less reactive than zinc यहाँ पे, and therefore no reaction will happen. Iron does not have the capacity to take SO4 away from zinc. But iron versus copper sulfate plus iron होगा तो क्या होगा देखो. If in second reaction copper sulfate reacts with iron, copper is less reactive, iron is more reactive. Iron can definitely snatch SO4 from copper. Therefore, CuSO4 will go to Fe and reaction will happen. And this reaction which is happening is called displacement reaction. So, copper sulfate plus iron becomes iron sulfate plus copper. डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह बदलना. SO4 ने अपनी जगह कॉपर के साथ बदल के Fe के साथ कर ली. And the last part of the chapter is very very easy and small. It's uses of metals and non-metals. Metals are used for making machines, cars, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. And this is another uses. Non-metal is used for life. Oxygen की बात कर रहे हैं. Oxygen is a non-metal with which we live. Non-metal is used in fertilizers. ये phosphorus की बात कर रहे हैं. और नाइट्रोजन की, phosphorus and nitrogen. Non-metals are used in water purification. कार्बन की बात कर रहे हैं. Non-metals are used in purple color solution which is applied on wounds as antiseptic. ये iodine की बात कर रहे हैं. And non-metals are used in fire crackers. ये sulfur की बात कर रहे हैं. So these are the uses of non-metals. These are the uses of metals. Although we have infinite variety of substances in the universe, the number of elements forming this substance is limited. There are no more than 94 naturally occurring elements. ये elements की बात कर रहे हैं. There are 94 natural elements which we have found out in the universe. Entire universe is made from these elements. And इस 94 में से डिवाइड होते हैं थोड़े मेटल्स, थोड़े नॉन मेटल्स, और बीच में एक कैटेगरी आती है जो 9th स्टैंडर्ड में आएगी विच इज़ कॉल्ड मेटलॉइड्स. एंड मेटलॉइड्स आर लिटल लाइक मेटल एंड लिटल लाइक नॉन मेटल. सो दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू रिमेंबर.